Now, relationships में, and it is actually true in everything in life. हमारी जिंदगी में मैंने आपसे बात की थी, it's like, so we have events in our lives, और फिर हम events के किसी एक specific aspect को उस पे focus करके we start making an interpretation of it, and based on our interpretations we have feelings, and then we, based on those feelings, we act, and then हमारे जो actions होते हैं वो हमारे लिए नए events, नई situations create करते हैं. A lot of times it's like when we tell stories about our relationships, that is basically just an indication कि हम उस relationship के किसी एक specific area पे हम focus कर रहे हैं, and then we are making an interpretation of that, and then based on our interpretations we are behaving or acting, and we have some feelings, and then we are acting and behaving on those. So लेकिन हम अभी in general जो narratives हैं, relationship narrative, what is it? A relationship narrative is your story about your relationships, okay? Like your wealth narrative or your health narrative is a story about your health and your wealth. So like other narratives, it is a psychological construct. Understand this. It is a psychological construct that has your distortions, your deletions, and your generalizations based on what you're focusing on, the thought that you are experiencing in that moment. Those thoughts that you're experiencing around your relationships. And this influences your actions in this area of your life. It often consists of rules, and the rules are what's acceptable and what is not. So, how we think people should behave, how we think people should not behave, कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए. So हमारी लैंग्वेज में जब इट्स लाइक लोगों को तो ऐसे करना चाहिए ना, हस्बैंड्स को ऐसे होना चाहिए, वाइफ्स को तो ऐसे होना चाहिए, ससुराल वालों को तो ऐसा होना चाहिए, वालदेन को ऐसा होना चाहिए, वालदेन को ये नहीं करना चाहिए. दोज आर रूल्स. ओके, वी हैव रूल्स. और प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो हमारे रूल्स हैं वो हम दूसरों पे अप्लाई कर रहे होते हैं, और हम ये चाह रहे होते हैं कि दूसरे हमारे रूल्स के हिसाब से चलें, एंड दे डोंट. एंड व्हेन दे डोंट, we feel uncomfortable in that situation. So for example, अगर फर्ज करो किसी का एक पर्सनल रूल है कि किताबें अपनी जगह होनी चाहिए, जूते अपनी जगह होने चाहिए, कपड़े अपनी जगह होने चाहिए, and their husband or their wife, they have this, जहाँ रख दिल चाहे भाई मेरा घर है, जहाँ चाहे मैं किताबें छोड़ दूं, मेरा घर है, जहाँ चाहे मैं अपने कपड़े छोड़ दूं, मेरे कपड़े हैं, जहाँ चाहूं मैं अपने जूते छोड़ दूं, मेरी मर्जी है. So when these two people enter into a relationship, because of these differences they may find it's difficult because they have their rules. So a lot of times people don't realize that they are trying to put their rules on other people, and that's when they get into problems. So हमारे जो rules हैं, we often don't really even understand what our rules are and how we are expressing those rules and where we are getting those rules from. So a relationship story includes what you have been through as well as what you saw growing up, your family history, your stories that you've heard, your culture, as well as your religion. So a lot of times you will find people have this कि जी वो मेरे खानदान में फलाने के साथ यूं हुआ था, ओके, मेरी फुप्पी की तलाक हुई थी, मेरी बड़ी बहन के साथ यूं हुआ था, मेरे अब्बा ऐसे करते थे. And I work with people who see, so for example, I work with women who see their father's behavior in their husbands. So they're like projecting their father on their husband. So if there was something that their father used to do, there was a way in which their father used to behave with their mother, and the daughter was more closer to her mother, she thought my mother is the victim and the father is the culprit. So now she sees her husband doing some behaviors, and she puts that frame and assigns those meanings. Okay, now my husband is being the culprit and now I'm the victim. Okay, so, and sometimes husbands do the same because they see their mother in their wives.
So जब और ये जो चीज होती है, this actually forms our narrative about our story about our relationships. Okay, many people live a narrative in which the problem is in the other person. They believe that if only the other person would change, life will be better. Okay, so, and this is such a unfortunately common thing, that you will find most people think that, you know, मुझे मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, मैं ठीक हूँ, सामने वाले मेरी अगर सास सही हो जाए ना तो सब ठीक हो जाए, अगर मेरे हस्बैंड फलाना काम करना छोड़ देना तो सब ठीक हो, अगर मेरी बीवी फलानी चीज छोड़ देना सब ठीक हो, अगर मेरी अम्मा ये चीज छोड़ देना तो सब ठीक हो जाए। एंड अम्मा ने भी नहीं छोड़ना, बेगम ने भी नहीं छोड़ना, लिहाजा चीजें कभी ठीक नहीं होती। इसका जो नेक्स्ट स्टेज होती है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है, इट्स लाइक देन पीपल स्टार्ट प्लेइंग ब्लेम गेम्स। वी विल टॉक अबाउट दिस, अभी थोड़ा माइंडसेट पे आगे बात करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। बट हमारे जो नैरेटिव्स होते हैं, हमारी जो स्टोरीज होती हैं, उसमें यू विल फाइंड, हैव यू एवर हर्ड अ स्टोरी जिसमें कोई ये कहे कि जी मैं विलन हूं? You will always find people will play the victim and how that victim became the hero. You will never find people playing the game and say that I was the villain. When it comes to relationships, this is a lot deeper and it's much stronger. Okay, so people will, when they talk about their relationships, they will become victim of other people's actions, their behaviors, and their past and their history and everything else, and they play play the victim role very, very strongly. Okay, or they will never say कि मेरा भी कोई कसूर था और मैंने ये गलती करी, but they will say कि ये दूसरे का कसूर था. Sometimes people do take the blame on themselves, but they don't realize they're still blaming someone. Okay, rather than solving the problem, either they're blaming someone else or they're blaming themselves, and none of that blame game actually solves the problem. So in every narrative there are three parts: what we focus on, what meaning we give an event, and what we do to create the results we desire. In relationship narratives, the issue is often based on differences in these elements. So husband is focusing on, I remember many years ago, I've worked with a number of couples in these kind of situations. So a couple आया and the wife was saying कि जी ये घर पे ये खर्चा नहीं करते हैं और वो फलानी चीज घर में चाहिए होती है तो वो नहीं देते। मैंने इनसे कहा कि हमें फलन घूमने के लिए लेकर चलें तो वो नहीं लेके जाते हैं। एंड हस्बैंड जो थे वो कि जी मेरे पास अभी खर्चे नहीं हैं, मेरे तो ऑफिस में तनख्वाहें मैं लोगों की नहीं दे पा रहा हूँ, उनका कुछ अपना छोटा सा बिजनेस था तो मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास मार्केट के अंदर कर्जे हैं. सो ही वाज फोकसिंग ऑन the financial situations, and he was not sharing with her what the financial situation is, and she was complaining because she did not know his financial situation because she thought कि इसके पास पैसा ये देता नहीं, so she had this कि बड़ा कंजूस है और वो छुपा रहा है और मुझे इसके पास पैसा है. बट वो हजरत जो थे वो कभी बताते नहीं थे बिकॉज ना उनका ये था कि जी अगर मैं बताऊंगा तो खामखाई में ये परेशान होगी, और उसको पता ही नहीं था कि इसके पास पैसे नहीं है. एंड देन दे हैड दिस कॉन्स्टेंटली फाइट गोइंग ऑन बिटवीन, और तरह तरह के कि जी ये नहीं करते और ये नहीं करते और इतनी कंजूसी दिखाते हैं, बट कंजूसी की वजह ये नहीं थी कि वो कंजूस है, उसकी वजह ये थी उनके पास पैसे नहीं. ओके, सो शी वॉज फोकसिंग ऑन कि ये घुमाने के लिए नहीं लेके जाता है, ये घर के अंदर खर्चा नहीं करता है, मैंने इससे फलानी चीज कही थी इसने ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया. और ये हजरत जो है बजाय इसके ये कहते हैं कि पैसे नहीं है, कोई ना कोई बहाना बांध के अभी नहीं इंशाल्लाह कुछ दिन बात करेंगे और तरह तरह से टालने की, और इस तरह ये बड़ी कॉमन किस्म की चीजें होती हैं. सो क्या हो रहा है कि पीपल आर नॉट लाइक sharing things with each other, and thus they're focusing on different things, and as a result they're assigning different meanings to situations, and as a result they are experiencing different feelings, and चीजें जो है वो खराब होती रहती हैं. So sometimes बहुत साल पहले मैंने एक कहीं पे कोर्स किया था, उसके अंदर एक फॉर्मूला सिखाया था, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक मॉडल सिखाया था.